हेलो स्टूडेंट्स। आशा करता हूं कि आप आनंदित होंगे, प्रसन्नता से होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 8 का सोशल साइंस का हिस्ट्री के पार्ट का एक्सरसाइजेज वाला पार्ट। उसका चैप्टर है 8। ये पुरानी बुक्स में उसका चैप्टर 11 था। ये द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। तो चैप्टर 8 द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, इसको हम देखेंगे आज। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, वाई वेयर पीपल डिससेटिस्फाइड विथ ब्रिटिश रूल इन 1870s एंड 1880s? पहला प्रश्न है, उसका मीनिंग हम देख लें, थोड़ा सा अर्थ देख लें उसका, कि जनता या लोग 1870 और 1880 के दौरान ये डिससेटिस्फाइड यानी असंतुष्ट क्यों हो गए ब्रिटिश रूल से। तो आंसर करेंगे हम, देयर वाज ग्रेट dissatisfaction with British rule in 1870s and 1880s. Some of the reasons for this dissatisfaction are as follow. तो निम्नलिखित कारणों से जनता ब्रिटिश रूल से असंतुष्ट हो गई, लोग असंतुष्ट हो गए। The Arms Act passed in 1878. This act disallowed Indians from possessing arms. तो 1878 में 1878 में आर्म्स एक्ट पास किया गया, जिसके कारण इंडियंस को जो शस्त्र हैं उनको रखने की मनाही की गई। सेकंड, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1878. This act was aimed at silencing those who were critical of the government. Under this act, the government could confiscate the assets of newspaper if they published anything that was found objectionable. तीसरा कारण हम लिखें, the Ibert Bill controversy. In 1883, government tried introducing the Ibert Bill. This bill provided for the trial of British or European individuals by Indian and so equality between British and Indian judges in the country. However, the white opposition forced the government to withdraw the bill. This enraged the Indians further. Who did the Indian National Congress wish to speak for? Indian National Congress wished to speak for all people of India, irrespective of class, color, caste, creed, language, or gender. It stated that India, its resources and system were not of any one class or community of India, but of all the different communities of India. What economic impact did the First World War have on India? Answer is, the First World War led to huge rise in the defense expenditure of the government of India. The government in turn increased taxes on individual incomes and business profits.
increased military expenditure and the demand for war supplies led to sharp rise in prices, which created great difficulties for the common people. On the other hand, business groups reaped fabulous profits from the war. The war created a demand for industrial goods such as jute bags, cloths, and rails, and caused a decline in the imports from other countries into India. As a result, Indian industries expanded during the war. What did the Muslim League resolution of 1940 ask for? Answer is the Muslim League resolution of 1940 asked for independent state for Muslim in the northwestern and eastern areas of the country. फिफ्थ क्वेश्चन को हम देखें. Who were the moderates? How did they propose the struggle against British rule? ये आंसर इसको आप अच्छे से तैयार करें. ये दो तरह से पूछा जा सकता है. शॉर्ट आंसर में अगर आया तो आप इसके 2 पॉइंट्स को लिख सकते हैं, केवल 2 या 3 पॉइंट्स को, और लॉन्ग आंसर की क्वेश्चन के रूप में आया तो आपको थोड़ा विस्तार से लिखना होगा. तो हम इस तरह से तैयार करें इसको. आंसर इज इन द फर्स्ट 20 years of its existence, the Congress was moderate in its objectives and method. The Congress leaders of this period were called the moderates. They proposed to struggle against British rule in non-violent manner, which the radicals called politics of petitions. They wanted to develop public awareness about the unjust nature of British rule. They published a newspaper, wrote articles, and showed how the British rule was leading to economic ruins of the country. They criticized British rule in their speeches and sent representatives to different part of country to mobilize public opinion. They felt that the British had respect for the ideals of freedom and justice, and so would accept the just demand of Indians. How was the politics of radicals within the Congress different from of the moderates? तो एक बार हम इसको पिछला क्वेश्चन जो है इसको देखें, इसको समझ लें थोड़ा सा. ये मॉडरेट्स जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो पहले शुरुआत के 20 साल नरम दल कहा जाता है इसको. तो कांग्रेस में एक नरम दल था, जो लोग थे कांग्रेस के, वो मॉडरेट उनको कहा जाता था, यानी नरमपंथी कहा जाता था, क्योंकि ये अखबारों में कॉलम लिखते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट की आलोचना करते थे और प्रार्थना करते थे. तो जो एक और दूसरा दल था कांग्रेस के अंदर ही, उसको गरम दल के रूप में जाना जाता था. और जो गरम दल था वो कहता था कि ये जो नरम दल की राजनीति है वो पिटिशंस की यानी याचनाओं की राजनीति है, इससे काम नहीं चलेगा, ऐसा उनका मानना था गरम दल वालों का. तो नरम दल और गरम दल, तो गरम दल को कहा गया है रेडिकल्स. इसमें हम देखेंगे, क्वेश्चन देखने पहले, हाउ वाज द पॉलिटिक्स ऑफ रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस डिफरेंट फ्रॉम दैट द मॉडरेट्स. तो
नरम दल के लोगों में की राजनीति से गरम दल की राजनीति कैसे अलग थी? आंसर इज द रेडिकल्स वर अपोज द पॉलिटिक्स ऑफ prayers followed by the moderates within the Congress. They explored more radical objectives and method. They emphasized the importance of self-reliance and constructive work. They argued that people must rely on their own strength, not on the good intention of the government, as was the stated policy of the moderate. They believe that people must fight for स्वराज। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसका इसका एक्सरसाइज का जो सेकंड पार्ट है हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए आपको इतनी ही तैयारी करनी है। चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आप कुशलता से होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। इन्हीं आशाओं के साथ धन्यवाद।